So previously we've talked somewhat about the idea of the universe, और यूनिवर्स के अराउंड हम लोगों ने गैलेक्सीज़ की बात की हैं, स्टार्स की बात की हैं. In that case we were talking about the Milky Way galaxy, but actually there are a lot more galaxies. In fact, the estimate that we have is that there are 10 to the 11 galaxies in our universe, and then all of those galaxies contain 10 to the 11 stars each. So यही आपको एक अंदाज़ा दे देगा that how insignificant humans are in the major context of the universe. अभी इतनी सारी ऐसे और objects हैं, ऐसी और galaxies हैं which we don't even know about. So this gives us some idea of our universe. But there is one very important idea that we do know of. वो ये है कि our universe is not static. हमारे यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सारे स्टार्स और सन हैं they're all at their place. In fact, what we say is that the universe is expanding. So universe बाहर की तरफ फैल रहा है. So all of the objects that we have, ये ऐसा नहीं अपनी जगह पे रुके हुए हैं, but in fact they are spreading outwards. क्योंकि इतनी सारी जगह है that they can spread outwards without running into any walls, if you want to call it that. अब हमें इसका proof कैसे मिला है that the universe is in fact expanding? How do we even know this is true? Now for this, the name of the phenomena which helps us to understand that the universe is expanding is redshift. But at the back of the idea of redshift is another phenomena जिसको हम कहते हैं the Doppler effect. So the Doppler effect, ये क्या होता है? Now to explain what the Doppler's effect really is, मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाता हूँ जो आपने it's going to be about something जो आपने real life में देखी है, and now we'll take that idea forward to understand the expanding universe. Now this video I'm about to play, इसको बड़ा गौर से देखिएगा. So what did we just see here? So first of all, जिस तरीके से ये गाड़ी हमारी तरफ आ रही थी, in doing so, as to the person who's filming the video, तो हमें आवाज़ तेज़ होती महसूस हुई. With it being the sharpest when the car was just passing us by, और फिर जब गाड़ी फिर से गुजर जाती है, then the voice again falls off. फिर आपकी आवाज़ जो है ये कम तेज़ हो जाती है. इस बेसिक फिनोमेना का नाम है Doppler's effect. Doppler's effect क्या कहता है? All it says is really this. So अभी ऊपर वाली वीडियो में वैसे हमने ये देखा था कि ये जो हॉर्न की आवाज़ थी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, और इसकी होने की वजह क्या है? So this is the apparent change in the frequency, या आपको पता है बिकॉज दी वेव स्पीड फार्मूला इज़ एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है जाहिर सी बात है वेवलेंथ भी चेंज हो रहा होगा. इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग वेवलेंथ मस्ट बी डिक्रीजिंग. सो एन अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ ऑफ अ वेव which is due to relative motion between the source of the waves and the observer. से relative motion भी it's again, अगर आप पहले वाली अपनी चीज़ें याद हैं so आपको पता होगा relative motion का क्या मतलब होता है. This means that in some way the distance between the source and the observer must be changing. तो या तो आपका जो सोर्स है ये उठ के ऑब्जर्वर की तरफ आ जाए, या ऑब्जर्वर उठ के सोर्स की तरफ आ जाए, या सोर्स ऑब्जर्वर से दूर चला जाए, या ऑब्जर्वर सोर्स से दूर चला जाए. सही. सो इट कुड बी ऑल ऑफ दोज केसेस एंड दीज लीड टू एन अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ अ वेव. अपेरेंट चेंज का क्या मतलब है कि जो गाड़ी का अंदर ड्राइवर था उसको तो एक ही फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है उस हॉर्न की, लेकिन बाहर जो ऑब्जर्वर है जिसको ये आवाज़ आ रही है
उसको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में कोई ना कोई फ़र्क महसूस होगा। तो ऊपर वाली ये जो वीडियो थी, वी कैन रियली स्प्लिट दिस इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट था व्हेन द सोर्स was moving towards the car. Source was moving towards observer. इस केस में क्या हुआ कि हमें ये महसूस हुआ दैट दी साउंड इज गेटिंग मोर पिच्ड। साउंड का जो चैप्टर था उसकी लैंग्वेज में ये कहेंगे, जनरली स्पीकिंग आई वुड से दैट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है एंड बेसिकली बाई v इक्वल्स टू f लैम्डा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है आई कैन ऑल्टरनेटिवली ऑल्सो से दिस कि वेवलेंथ कम हो रहा है। सही, तो अगर आपका ये जो सोर्स है ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम ऑब्जर्व हुई। इसका दूसरा केस क्या था, जब हमारी जो गाड़ी थी ये इस ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, सो सोर्स वाज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसे केस को रिसीडिंग भी कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इन दिस केस हमने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड अपीयर्ड लेस, और वेवलेंथ की ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि भाई वेवलेंथ ज़्यादा ऑब्जर्व हुई। राइट, वट एवर हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा वेवलेंथ पे असर आएगा। I'll just show you this one image because Doppler effect technically is not in our syllabus. लेकिन just so that you know and understand and remember how this works, I'm going to show you an image. So frequency किस तरीके की appear होती है इसको आप समझ सकते हैं in terms of the wave fronts. So यहाँ पे अगर वैसे ये ambulance खड़ी होती तो आपको पता है circular wave fronts would be positioned around the source of this wave, which in this case is the siren. लेकिन अब जिस तरीके से this source is traveling, so you can probably see कि अब ये पहले अगर एक wave emit करता है तो when it goes forward then it emits another wave, then another one. So on someone who is towards this side where this source of sound is approaching, यहाँ पे सारे wave fronts करीब आ रहे हैं या crests जो हैं ये करीब आ रहे हैं. So यहाँ spacing कम हो रही है wave fronts के दरमियान, which causes the wavelength to decrease. For the other person जिसके दूर जा रहा है ये source of sound, यहाँ आप देख सकते हैं that now these wave fronts or these crests इनके दरमियान अब spacing बढ़ रही है, which is going to cause the wavelength to increase. This is how you can remember this very basic idea. अब यहाँ पे ये सारा expanding universe से कैसे relate करता है? So idea ये है कि when we analyze the light which is received from stars and galaxies जो हमसे काफ़ी दूर हैं, so हम ये observe करते हैं, this is how from these distant galaxies appear redder in comparison to the light on Earth. Now we do this by using something called emission and absorption spectra. लेकिन वो हमें ये चीज़ बताता है कि भाई ये जो बाहर से लाइट आ रही है ना, वाकई जो उसकी अर्थ पे वैल्यू है, दिस इज़ रेडर देन दैट. दिस इज़ वन वे टू से इट. Another way to say it is that the light is shifted towards the red end of the visible spectrum. Yeah, the third way is to say that this light is now red shifted. अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई बताएं रेड शिफ्ट का मतलब क्या है. सो अगेन इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है. आप लोगों ने पहले ये चीज़ पढ़ी होगी. लेट मी शिफ्ट दिस हियर. In waves, you must have studied the visible light spectrum: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, with this being the highest wavelength and obviously the lowest frequency, and this one being also the lowest wavelength and the highest frequency. So यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी सारी light है, this is shifted towards this end. अगर कलर वाकई समझे ग्रीन जैसा होना चाहता है, व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम दी स्टार इज ए कलर लाइक येलो.
So this is what we mean when we say that the light is shifted towards the red end of the spectrum, या the light has been red shifted. अब यहाँ पर अगर आप नोट करें, अगर ये रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो गया तो इसका वेवलेंथ बढ़ गया. एग्जैक्टली इसी तरीके से हम रेड शिफ्ट का डेफिनेशन लिखते हैं. वी से दिस इज द इंक्रीज इन apparent wavelength of light received from distant भी ना कहें because it's kind of understood, from receding. सही. अच्छा, अब receding का मतलब मैंने अभी आपको बताया था that अगर कोई दो चीज़ों के दरमियान फासला बढ़ा है, we would say that one thing is receding from another. ये है रेड शिफ्ट का मतलब. अब आपको पता है कि अगर वेवलेंथ बढ़ा है, so let's go back here. अगर वेवलेंथ बढ़ा है तो लाजमी बात है कि ये जो सोर्स है, दिस वॉज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ठीक है. नाउ द ऑब्जर्वर इज अस ऑन अर्थ. द सोर्स ऑफ द वेव इज बेसिकली द स्टार्स और द गैलेक्सीज विच आर एमिटिंग दोज लाइट. और हमें ये नज़र आता है कि वो वेवलेंथ जो है उनकी ज़्यादा है एज टू व्हाट इट्स सपोज टू बी. तो इसका मतलब ही ये स्टार्स और गैलेक्सीज हमसे दूर जा रहे हैं. दिस इज़ वन एविडेंस फॉर द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स. सो अगर ये पहला पीस ऑफ एविडेंस है तो दूसरा पीस ऑफ एविडेंस क्या है? सो द सेकेंड पीस ऑफ एविडेंस इज दिस. पहले तो हमने ये नोट किया दैट लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट गैलेक्सीज अपीयर्ड रेडर, से दैट इट वाज रेड शिफ्टेड. दूसरा ऑब्जर्वेशन इज दिस दैट द फर्दर अवे द गैलेक्सी the faster it is receding. तो जो हमारे से गैलेक्सी दूर है, it is also getting further away faster. दूर वाले और भी तेज़ी से दूर जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ वॉट इट मीन्स. और स्पीड का अंदाज़ा हमें किस चीज़ से देख के होता है कि वो वेवलेंथ कितनी ज़्यादा रेड शिफ्टेड है. सही है. सो व्हाट वी प्रोबेबली ऑब्जर्व्ड वाज दैट दूर वाली गैलेक्सीज की लाइट इज़ इवन मोर रेड as compared to the ones which are not as far away. तो अगर वो ज़्यादा रेड है, इसका मतलब it must also be moving away faster. तो अब ये expanding universe की सारी बातें हो चुकी हैं. Without fault, the examiner will often be asking you this, that how do these observations support the idea of the Big Bang theory. इसको ये किस तरीके से सपोर्ट करता है? सही है. So how does this support the idea of the Big Bang theory? So Big Bang theory का क्या idea है? And obviously I'm not talking about the TV show, I'm talking about the theory. So Big Bang theory का ये idea है that it says that all of the matter was first at one point और फिर धमाका हुआ and then all of this went outwards. ठीक है, तो धमाके की वजह से then everything came into being. Now we'll be taking the reverse reasoning in order to explain कि क्यों ये धमाका and the idea of this धमाका, why does it make sense? So first off, we know that light from these distant galaxies is redshifted. जब आप पेपर में आंसर लिख रहे होंगे, so redshift का मतलब बताना is on you if the examiner has not asked this in a previous part. अभी क्योंकि हमने ऊपर रेड शिफ्ट की बात की है, इस वजह से मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा, बट यू नो व्हाट दिस इज, दैट दिस इज इन द इंक्रीज इन द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ, या आप कह दें कि फ्रीक्वेंसी कम हुई है. सो हमें पता है कि डिस्टेंट गैलेक्सीज से जो हमारे पास लाइट आ रही है ये रेड शिफ्टेड है. सो दिस गिव्स अस द एविडेंस दैट दीज गैलेक्सीज आर मूविंग अवे. सही, ये ऊपर वाली जो हमने पहली ऑब्जर्वेशन लिखी है उसकी बात है. Second observation
is that the further away the galaxy, exactly जो ऊपर लिखा हुआ है, the greater the redshift, ठीक है. So the greater the redshift, this means कि जो दूर वाली galaxies हैं they are also receding faster. अब यहाँ पे आपका रीजनिंग वाला और यहाँ पे अब आपका लॉजिकल पार्ट आता है. Galaxies further away are receding faster. So now how does this support the Big Bang Theory? Big Bang Theory ये कह रहा है कि भाई अगर हमने वाकई ये एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का आइडिया हमने इस तरीके से समझ लिया है कि आपके पास सब कुछ दूर जा रहा है और जो ज़्यादा दूर है वो ज़्यादा तेज़ी से और दूर जा रहा है. इफ़ वी टेक दिस बैक इन टाइम, सो गोइंग बैक इन टाइम, इसका मतलब है कि अगर अभी इस लम्हे सब कुछ दूर जा रहा है, there must have been a point where the galaxies and stars must have been close together. At a very dense point. सही, क्योंकि अब यहाँ पे जाहिर सी बात है एक ही पॉइंट पर अगर आप समझें कि आपकी सारी की सारी गैलेक्सीज और स्टार्स हैं, सो दिस मस्ट हैव बीन अ वेरी वेरी डेंस पॉइंट. सही है. सो दिस इज़ हाउ द रीजनिंग गोज फॉर द आइडिया ऑफ द बिग बैंग थ्योरी कि क्योंकि आपके पास गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन विच सपोर्ट्स इट. ये ऑब्जर्वेशन है, दिस सपोर्ट्स दैट गैलेक्सी जो दूर हैं वो और भी ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रही हैं. So अगर ये अभी दूर जा रही हैं, इसका मतलब in the past they must have been closer together and there was this explosion, the bang, which propelled all of them in their different directions. So this is the end of space physics for the O-level students, but for the IGCSE students there's another video you must now watch.